Good morning, student. I am Mr. Praveen Agarwal, and today we are going to start the first chapter, and chapter name is your Introduction to Accounting. So, as this is the first class of accounting, so we have to understand the meaning of accounting. What do you mean by accounting? Accounting का मतलब क्या होता है? So we can say that we know the meaning of business. Business का बारे में हमको idea है. Business का मतलब क्या होता है? Business means your purchase and sale of goods or services with the aim to maximize the profit. ठीक है? जब हम business करते हैं तो business का objective क्या है? To earn the profit. So we can say that accounting is the language of business. जब कभी भी हम business करते हैं, okay, so in order to calculate the net profit or net loss of the business, what we have to do? We have to prepare the various accounts. ठीक है? Basically accounting का मतलब क्या होता है? Accounting का मतलब होता है हिसाब किताब करना. Accounting is the art of recording the transactions. हमारे पास में जो भी transactions होंगे, okay, so that all the transactions would be recorded in the books of accounts. Okay. Now, what type of transactions which we are to be recorded? Only transactions which can be measured in terms of money. Okay, so we can say that accounting is the art of recording, measuring, classifying, summarizing, and interpreting the information relating to the economic events of an organization. Okay, we can say that. So we can also say that accounting is the language of business. Accounting is the language of business. Okay, so we can say that accounting is the language of business. ठीक है? अब हमको समझना है अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. हम समझ गए अकाउंटिंग का मतलब होता है क्या? हिसाब किताब करना. ठीक है? अब जैसे हम इट इज जस्ट लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल. जैसे एक साइकिल है. साइकिल अगर हमको अगर साइकिल चलाना सीखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम सपोज इफ आई विल गिव यू वन बुक एंड टू रीड अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द साइकिल. ठीक है? आपको एक किताब दे देंगे. किताब में आप साइकिल चलाने के बारे में 100 पेजेस यू आर रीडिंग. ओके, तो I am assuring you 100% that after reading the book also you can't ride the cycle. आप किताब पढ़ के आप बोलेंगे हम साइकिल चला लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है? जब तक आप साइकिल को प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं चलाएंगे तब तक आपको साइकिल चलाना आपको 2 से 3 दिन लगेगा प्रैक्टिकली. तब तक साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे. सिमिलरली अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग में 10% क्या है? थियोरेटिकल है, 90% हमारा प्रैक्टिकल है. सो इट इज द प्रैक्टिकल concept of business. ठीक है? So accounting is different from other subject. ठीक है? सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए. It is the totally practical concept. Okay? So only 10% theoretical concept has been there. So unless and until if we could not able to understand the practical concept of accounting, ठीक है? तो we could not able to solve the problems. ठीक है? रोड मेमोराइजेशन करके हम लोग प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले हमको अकाउंटिंग का मतलब हमको समझ में आ गया. अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ठीक है? बिजनेस में एवरी बिजनेस व्हाट दे डू, उनको अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता होना चाहिए. दे मस्ट नो अबाउट द एसेट्स, दे मस्ट नो अबाउट द लायबिलिटीज, दे मस्ट नो अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द अकाउंट्स. ठीक है? सो
जनरली अकाउंटिंग का डेफिनेशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। एंड रिमेंबर आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जिसमें हम अकाउंट जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज अदरवाइज नोन एज, अकाउंट्स में हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज अदरवाइज नोन एज योर journal. Recording of transaction is otherwise known as your journal. Okay, so which type of transaction which we are required to record? Only business transactions. ध्यान रखिएगा, खाली business transactions, ठीक है। आपका business से related जो transactions हुआ है, only that transactions must be recorded in your accountancy. Okay, now this is the meaning of accounting. Now what we have to do, we must know the objectives. We must know the objectives of accounting. What are the various objectives of accounting? हम accounting क्यों maintain करते हैं? सबसे पहले accounting maintain करने का reason क्या है? सबसे पहले most important reason क्या है? To calculate the net profit or net loss of the business. सबसे पहला मेरा काम क्या है? To calculate the net profit, to calculate the net profit or net loss of the business. अब बिजनेस में का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है वो हमको पता नहीं है, हम एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया हमको पता नहीं है, तो वी आर इंटरेस्टेड टू नो अवर रिजल्ट। सिमिलरली एक बिजनेसमैन if he starts the business, हम बिजनेस क्यों करते हैं? To maximize the profit. अब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमको कैसे पता चलेगा? Only by preparing what? Only by preparing accounts. Okay, so first objective is to what? Is to calculate the net profit or net loss of the business. Okay, second objective is to keep systematic record, to keep systematic record of business transaction, to keep systematic record of business transactions. देखिए already as I have said, कौन सा transactions record करेंगे? Business transactions. हम एक business कर रहे हैं, business में business करने के लिए हमको क्या चाहिए? Cash चाहिए, capital. We will discuss about all these terms, assets, okay, liabilities. So whatever the transaction which has been relating to the business, only that transaction must be recorded. Okay. To ascertain the financial position of the business. बिजनेस में आपका बिजनेस रन कर रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिजनेस का? आइदर योर बिजनेस इज रनिंग इन प्रॉफिट और इट इज रनिंग इन लॉस, ठीक है। सो देयर आर वेरियस पार्टीज, आउटसाइडर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अवर बिजनेस, ओके, सो वी कैन ascertain our financial status of the business. And last but not the least is to ascertain the tax liability, to ascertain the tax liability of the business. Tax liability of the business मतलब क्या? As we know, it is mandatory. Mandatory means what? It is compulsory for every businessman to pay the tax at the end of the year. End of the year means कौन सा year में होगा? At the end of the financial year or accounting year. Okay. So that means we are required to pay the tax. So only after preparing the accountancy, okay, we could able to calculate our net profit or net loss, which will help us to ascertain the tax liability of the business. So now next we have to understand the function of accounting. So functions of accounting. So first of all, as I have said, सबसे पहले काम क्या है? Identification. That is your identification of transaction. Identification of transactions. So already as I have said, first of all we have to identify the business transaction. Okay, any events or any transactions relating to the business, only that transaction must be identified. Okay, and only that transaction must be recorded in our books of accounts. Okay, and remember, no qualitative information has been recorded, just like honesty, intelligence, hard work. So these all qualitative attributes are not recorded in
your business accounting. Okay, so second one is to measurement. Second one is the measurement. Now what we have to do after the identification of business transaction. Okay, all the business transaction which we have to see that all the transaction can be measured in terms of money. Okay, so any transactions which cannot be measured in terms of money, that transaction will not be recorded. Only those transactions which can be measured in terms of money or monetary forms. Okay, so that transaction must be measured. Okay, third bit is the recording. So as I have said, whatever the transactions, okay, there are so many transaction बहुत सारे transaction हो सकते हैं, या तो cash transaction हो सकते हैं या non cash. Generally transactions is of two types. Okay, first one is the cash transaction and second one is the credit transaction. एक होता है cash, दूसरा क्या होता है credit. Credit का मतलब क्या होता है non cash transactions. And you remember both the transactions are to be recorded in the books of accounts. As we are required to calculate the net profit or net loss, तो जो भी transactions होगा, but which type of transaction relating to the business. Only business transaction must be recorded, either they are of cash or they are of credit transactions. Okay, so recording of transactions, as I have said, that recording of transaction is otherwise known as a what? We can say that recording of transaction is known as a journal. How to record the transaction, that we will read later. We have to follow the concept of double entry system. हमको डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ बिट, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन. Okay, so whatever the accounts which has been recorded in the books, okay, suppose जो भी transactions हम record करेंगे उसको हम क्या करेंगे? That would be classified. Okay, so such classification of accounts is known as, otherwise known as your ledger. इसको हम क्या बोलते हैं? Ledger. Next bit, after the preparation of ledger, what we have to do? We have to summarize the transaction. That is your summarizing the transaction. That means whatever the balance which we will get after the preparation of ledger, that balance must be transferred to the trial balance. Okay, so that is your known as summarization of transaction. That is your trial balance. And after summarizing, what we have to do? We are required to prepare trading account and profit and loss account. Trading account and profit and loss account. Trading account, profit and loss account. Why we are preparing? To calculate the net profit or net loss of the business. Okay. Last but not the least is our what? Last we have to communicate. After all these events, what we have to do? Communication. We are required to communicate our transaction to whom? To the external users of our accounting information. Who are the external users? External users can be creditor कौन होते हैं? Creditor जो हमको बिजनेस चलाने के लिए पैसा दिए हैं. Creditors are those person who has given money to whom? To the owner for running the business. So creditor can be the outsider. Government, they are also interested. Okay, they can also be considered as what? External or outsider users of our accounting. So these are all the functions of accounting. So next term is bookkeeping. Bookkeeping. And what do you mean by bookkeeping? Remember, bookkeeping का मतलब क्या होता है? It is the initial stage of accounting. जब हम नया अकाउंट्स करना शुरू करते हैं तो bookkeeping who is maintaining the bookkeeping? Bookkeeper. Bookkeeping is maintained by the person known as bookkeeper. And bookkeeper कौन होते हैं? Generally they are the junior staff. वो लोग junior staff होते हैं. Okay. And they only know how to record the transactions. Okay. And now after bookkeeping, what starts? Our accounting starts. We can say that your accounting starts when bookkeeping ends. Bookkeeper का काम क्या है? Bookkeeper का काम है, he will record the transactions, मतलब he will prepare your journal. Okay, bookkeeper will prepare the journal as well as he can classify the accounts. That is your ledger. He can also classify the accounts. That means he can prepare your ledger. And after that,
all the work of accounting, that is your summarizing, interpreting, communicating, all is to be done by whom? All is to be done by the accountant. Okay, so we can say that bookkeeping is maintained by junior staff, whereas accounting is maintained by senior staff. Okay, bookkeeping is the primary stage of accounting, whereas accounting is the secondary or final stage of accounting. Okay, so bookkeeping is concerned with day-to-day recording of the transactions, whereas accounting is concerned on the basis of bookkeeping. Okay, so that is the meaning of your bookkeeping. So next we have to understand some basic accounting terms. अब हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में मालूम होना चाहिए. सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म क्या होता है? कैपिटल. सो कैपिटल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? कैपिटल मींस व्हाट? कैपिटल का मतलब होता है इट इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन इन्वेस्टेड बाय हुम? बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस. ओके, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए. पैसा कौन देगा? ओनर. एंड रिमेंबर, ओनर इज अदरवाइज नोन एज, ओनर को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ओनर इज अदरवाइज नोन एज प्रोप्राइटर. तो जो भी पैसा प्रोप्राइटर लगा रहा है अपना बिजनेस में टू स्टार्ट द बिजनेस, एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोज 5 लाख रुपीस राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीस 5 लाख रुपीस, तो दैट अमाउंट वुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट? दैट अमाउंट वुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल. उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बिट, सेकंड वन इज योर ड्राइंग्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स? ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब होता है, लिसन केयरफुली, any amount of cash or goods which has been withdrawn by whom? By the proprietor for their personal use, for their private use. Okay, so that amount will be considered as drawings. Okay, owner or proprietor अपने बिजनेस में से आइदर वो क्या विड्रॉ करेगा? आइदर कैश विड्रॉ करेगा और गुड्स विड्रॉ करेगा. For which use? For personal use. Okay, for domestic use, for household expenses. Okay, so such amount is considered as your drawings. For example, purchased laptop for personal use. Okay, personal use has been considered. That means it would be treated as drawings. अगर क्वेश्चन दिया रहेगा purchased typewriter for office use, so office use cannot be considered as drawings. Remember, only personal use could be considered as drawings. Okay, third one is your assets. So what do you mean by assets? Assets का मतलब क्या होता है? Generally assets means properties of the business. Properties of the business. That means we can say that anything, okay, anything which can be considered as properties of the business. Business के point of view से कोई भी चीज अगर वो property है, okay, that would be considered as what? Assets for the business. For example, cash in hand, cash at bank, stock, building, machinery, typewriter, motor vehicle, two-wheeler, your horses and carts. Okay, so these are all what? These are all you are considered as your assets for the business. Anything which can be considered as properties for the business. Okay. Now next bit is your debtor. So what do you mean by debtor? Debtor कौन होता है? Debtor, these are the person to whom goods has been sold on credit. Okay, basically they are known as our customer. Okay, so debtor का मतलब क्या होता है? हम सेल्स कर रहे हैं. सेल्स इज ऑफ टू टाइप, वन इज अ कैश सेल एंड वन इज अ क्रेडिट सेल. अगर हम किसी को उधारी में गुड्स बेच रहे हैं, ओके, तो दैट पर्सन वुड बी कंसीडर्ड एज आवर डेटर. एंड रिमेंबर, डेटर इज आल्सो आवर एसेट. डेटर कैन बी कंसीडर्ड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस. डेटर इज आल्सो एन एसेट. व्हिच टाइप ऑफ एसेट? इट इज आवर करंट एसेट्स. नाउ नेक्स्ट बिट इज योर क्रेडिटर. सिमिलरली क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? These are those person from whom
we have purchased goods on credit. Okay, so creditors are those person, okay, from whom goods has been purchased on credit. Okay, so they are known as what? They are known as your creditor. Okay, now next term, most important term is your liabilities. So liabilities का मतलब क्या होता है? As I have said, हमको बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? मेरे को कैश चाहिए. ओके, तो देयर आर टू ऑप्शन. सपोज वी आर स्टार्टिंग वन बिजनेस. हम एक बिजनेस, सपोज ये मेरा बिजनेस है, हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है. और बिजनेस में पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा? बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करेगा. सो ओनर इज अदरवाइज नोन एज व्हाट? ओनर इज अदरवाइज नोन एज प्रोप्राइटर. सपोज हमको बिजनेस करने के लिए हमको 5 लाख रुपीस हमको बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है. सो ओनर हैज गॉट टू ऑप्शन. ओनर के पास दो ऑप्शन है. वन इज व्हाट? वन इज ओनर्स मनी. ओनर्स अपना पैसा लगाएगा. सपोज ओनर अपना पैसा लगा रहा है. कितना पैसा लगा रहा है? वो 3 लाख रुपया लगा रहा है वो अपना पैसा. ओके, एंड स्टिल हाउ मच ही रिक्वायर्स रुपीस 5 लाख. सो कितना रुपीस चाहिए उसको? 5 lakh rupees चाहिए उसको. So still he requires how much? Still he requires your 2 lakhs. 2 lakh rupees. What he will do? He will borrow from outside. वो क्या करेगा? वो पैसा बाहर से borrow करेगा. That is your outsiders money. How much he will borrow? Rupees 2 lakhs. Okay. Outsiders कौन-कौन हो सकते हैं? Outsiders can be creditor. Outsiders can be your creditor. Creditor already we have read the meaning of creditor. Then bank loan. बैंक से भी वो लोन ले सकता है, ठीक है. So these are the outsiders. So that means 3 lakh rupees which has been invested. 3 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किया है ओनर, उसको हम क्या बोलेंगे? This amount will be considered as what? As your capital. And this 2 lakh rupees which has been invested by owner from outsider, this 2 lakh rupees would be considered as what? This 2 lakh rupees would be considered as liabilities. So liabilities का मतलब क्या होता है? Liabilities का मतलब होता है outsiders money which has been borrowed by the firm to start the business. मतलब फर्म को ये पैसा देना है. 2 lakh rupees फर्म को पैसा वापस करना पड़ेगा along with some rate of interest. Okay.